So imagine a life which I'm going to paint for you. A life where you wake up in the morning at your own pace. आप सुबह उठते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है. There's nothing that's rushing you. And then you have a lovely morning routine. Whatever you want to do. आप पढ़ना चाहते हैं, you want to read, you do that. आप meditate करना चाहते हैं, you do that. You want to play, you want to work out, you do whatever you want to do, things that you love doing. And then you have a nice chill breakfast. कोई load नहीं, कोई stress नहीं, there's no rush. You feel at peace. Like you're not just getting ready for the day with no time in between for yourself. And then you work from maybe your home, or you work close, or you stay close to office. So you don't have to run into traffic jams or anything like that. आप वक्त से पहुंच जाते हैं. You are acknowledged there, or maybe you just work from home, so you start your laptop or your desktop at that point, and you work through the day. It is challenging work, huh? It pushes you. It really drives you. But it's work that you find joyful. आपको अपने काम में मजा आता है. आप अपने काम से प्यार करते हैं. It doesn't feel like work for you. और फिर दिन खत्म हो जाता है. Come back home and you do things that you again want to do. आप शायद एक swim के लिए जाते हैं. You go for some hobby class. You meet with some friends. You watch some television. Relax. And then you wind up the day feeling grateful. Feeling grateful for what you have. आप genuinely अपने आप को ना चोटियां काटते हैं कि क्या वाकई में मुझे ये जिंदगी जीने के लिए मिल रही है. A life where I'm enjoying my work. I have no stress. I have people around me that I absolutely love. And that is a wonderful life. Because you have freedom to do whatever you want. जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं. उसकी आपको आजादी है. You can do whatever you want, whichever way you want. आप जिस तरह से करना चाहते हैं, आपको उसके लिए आजादी है. And you can do it whenever you want. आप जब कभी भी करना चाहते हैं, आपके पास वो आजादी है. This is a very special life. And you have to answer this in the comment section. Tell me, would you like a life like this? क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे या नहीं? This is a life that money gave me. एक ऐसी जिंदगी है जो पैसे ने मुझे दी. And this is a life that money can give you. क्योंकि सबसे बड़ी चीज पैसे के बारे में जानते हैं मैंने क्या सीखा है? कि पैसा ना चीजें नहीं खरीदता. हाँ खरीदता है, लेकिन पैसे की सबसे बड़ी अहमियत है कि वो हमारे लिए आजादी खरीद सकता है. Money doesn't just buy things for us. Money buys you freedom. आजादी. जो चीज आप करना चाहते हैं उसकी आजादी, जिस ढंग से करना चाहते हैं उसकी आजादी, जब करना चाहते हैं उसकी आजादी. Because if you really think about it, when you spend your money to buy a car, to buy a house and all of those, you will of course spend that money, and at some point of time it will work out. That's absolutely fine. But imagine if you made your money work for you in a way where you had your freedom. आप जिस तरह की नौकरी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते आप वो डिसाइड कर सकते हैं. आप जहां रहना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. क्या आप पहनना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. You have the power to make decisions and choices in life that you want to take. And that is what money gives you. लेकिन reality तो बहुत अलग है. For almost all of us, the reality is so different. हम वो 9 to 5 की जॉब में घिसे पड़े बन रहे हैं. 9 to 9 की वो जॉब है, बॉस चिल्ला रहा है, your loans are adding up, you're driving up your credit card payments, you have home loans, you have car loans, you have EMIs for your smartphones and whatnot, and you think that all of this is going to get over. But let me tell you, I am 43. I have lived life longer than most of you have. आप 10, 20, 25, 30 साल भी यही करते रह जाएंगे और यही सेम चीज नहीं बदलने वाली. You will be more and more in debt. You will have loans piling up. You are not going to say no to your desires, and somehow जो कुछ भी आपको लगता था आपके पैसे के साथ आप कर पाएंगे, that wouldn't be possible. The question is, why is that? ऐसा क्यों है?
क्योंकि एज अ जनरेशन आपके पास वो हर एक चीज है जो किसी को भी जरूरत है टू सॉर्ट आउट देयर लाइफ. यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, यू हैव ऑल द एक्सेस इन द वर्ल्ड. तो ऐसा क्यों है आप अभी भी पैसे को अपने लिए, why is making money, why is building wealth so hard? It should be easy, right? Everything that you need in life is available, isn't it? Because no one taught us. हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, हमारे स्कूल ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे कॉलेज ने हमें नहीं सिखाया, हमारे कॉलीग्स ने हमें नहीं सिखाया. No one taught us how to make money. All that we were taught how to earn a living. हर एक इंसान ये बताता रहा कि काम कैसे करना है. हर एक इंसान ये बताता रहा कि डिग्री ले लो, then find a job, earn a salary and just spend the rest of your life making that salary work for you. That is all that we were taught. Nobody taught us that we have to earn money, work for us. And that includes, आपको ऐसा लगता है ये तो इंसान सॉर्टेड लग रहा है. I went to the US, I studied there, I went to this fancy top business school, I had a brilliant job where I was earning so much of money, I was then becoming an entrepreneur, I raised a lot of money, I then ended up with this money graph. This is my real life. This is my real life. At the age of 24, odd jobs करके जितना भी पैसा कमा सकता था कमाया. And then at the age of 26, I had a brilliant job. इतना पैसा जितना मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था. And at 29, 3 साल बाद, I was broke. I was without a job. I didn't have money. I really didn't. लेकिन फिर 31 साल में, again got a good job and again started making money. फिर 36 साल में, I again was in a lot of debt. कर्ज के तले, credit card, दोस्तों से उधार. Then at 37, things kind of stabilized. Then at 39, I was again broke. And आज जाकर, at the age of 43, I have financial freedom. मेरे पास आज इतना पैसा है कि मुझे अब जिंदगी में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है. But it took a lot of effort to get to this point. And the truth is that when I was broke, nothing seemed to help. वो किताबें जो मैंने जिंदगी भर पढ़ी थी ना, वो कोर्सेज, वो वीडियोस, लोग, nothing seemed to work. So what did I do? What I usually do? I started creating content. I started imagining myself as that 20-year-old Ankur, and I said, I have to make content. But the truth is, I'm not qualified. मैं ना CA हूँ, ना CFA हूँ, ना SEBI registered हूँ. I'm not a financial advisor. I'm not supposed to be doling out any sort of financial advice. But I think what I tried to do resonated because I had something. The experience of failing. मैं जिंदगी में बहुत ठोकरें खाकर वो सब सीखा था, which I was trying to teach you. And that is what works. So I failed so many times when it comes to money that I had a lot to share. I had a lot to discover. I had a lot to share with all of you. और मैं basically उस 20 साल के अंकुर के लिए कंटेंट बना रहा था जो काश मुझे किसी ने बताया होता. I was making content for the 20-year-old Ankur, and all that I wish that I was told was something that I started sharing with all of you. 1000 वीडियोस बना चुका हूं, 500 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, and there isn't a single day I don't get an email like this. ये एक एक्चुअल ईमेल है, 2 दिन पहले आई थी. Hi Ankur, I am whatever the name is, a recent 2023 MBA graduate from IIM Mumbai. तो कोई ऐसा random Warikoo Institute of Management नहीं है, बकायदा legit college. Being brought up in a middle class family, I really have a high ambition to get rich. I've just started earning now, and thanks to your videos, at some time investing a part of my salary too. तो अभी तक सब ठीक है. But to be fair, I want to get rich quickly. जल्दी से अमीर होना है अंकुर. I see my friends earning more than me.
driving better cars, and I tell myself I have to be there. मुझे भी वहीं होना है. अगर मेरे दोस्त इतनी अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मुझे भी वहीं होना है. But I don't know how. Should I build a startup? Startup करूं? Should I invest in Bitcoin? Should I buy property? I'm really confused. How can I, just another guy with just another job, become a billionaire by 30? मुझे करोड़पति नहीं अरबपति बनना है by the time I am 30. I really need help with this. और मैं ये पढ़ता हूं, I'm like, भाई अभी भी जंग जारी है. लाइक यू फील कि 1000 वीडियोस बन चुके हैं, इतना टाइम बिता चुके हैं, तो लोग सीख चुके होंगे. बट यू रियलाइज कि दुनिया में बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लॉस्ट फील करते हैं, हु फील लाइक वी डोंट नो इनफ, वी स्टिल डोंट नो इनफ. एंड पैसे को लेकर ये पैरालिसिस जो है ना, वो खोखला कर देता है. दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू राइट मेक एपिक मनी. स्टूडियो में आते आते आदित्य जो मेरे कॉलीग हैं वो पूछ रहे थे कि आपने इतने वीडियोस बनाए हुए हैं तो किताब की जरूरत क्यों है. एंड आई ऑफन से कि इस दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, हर एक इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को किसी भी वक्त पे मिल सकता है, टू गेट इट इन अ कंसाइज मैनर, जहां एक लॉजिकल फ्लो है, जहां हम समझ सकते हैं कि हर एक चीज को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए, दैट इज वैल्यूएबल. To bring curation and structure to information is valuable, which is what this book attempts to do. It's a book that I wish I was told when I was in my young days. It's a book that I wish school, college, my parents, my relatives, my well-wishers had told me about when I was in my 20s. It's a book for you. It's genuinely a book for you. क्योंकि मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, what would a book about money feel like for people in their 20s or in their 30s? Because that cannot be a normal book. ज्यादातर लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है. You find it very boring, you find it requires a lot of focus, a lot of energy. So you have to make that book work for you. And that's why it's a book that's easy to read. It's very, very light. It's a book that is not technical. It doesn't have jargons. और ये एक money book है. So it has to get detailed at some point of time, but I have tried my best to not make it technical, to not bring jargons in, and it still tells you what you have to do. तो जो आपको पैसे के साथ करना है, वो हर एक चीज आपको सिखाएगा. Because this is a gift that I have for you. I genuinely want to help you make money. I genuinely want to help you lead the life that you need to lead, that you deserve to have. And that will be my truest, happiest moment when I hear one person amongst all of you saying, अंकुर इस किताब ने ना मुझे पैसे के बारे में वो चीज़ बताई जो किसी और ने आज तक नहीं बताई थी. और उसके चलते मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने काबू में कर लिया. I took charge of my money, of my life. And the main thing there then will be freedom. Go back to what I said. पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता. पैसे की सबसे बड़ी अहमियत होती है कि वो आपकी आजादी आपके लिए खरीद सकता है. Money is not just for buying things, it can buy you your freedom. And I want all of you to experience your freedom. मैं चाहता हूं कि आप जिस भी उम्र में हो, you could be below 18, you could be 18 to 30, just starting your job, you could be in your 30s in the middle of your career, you could be in your 40s thinking all is over and मेरी जिंदगी अब नहीं सुधर सकती. And I am here to assure you, you can still earn your freedom back if you followed that principle. Because making money is about a mindset. Making money is an art. But when you think about money as wealth, when you think about money not as something that you are buying, but something that makes it work for itself. You worked so hard for money. Why isn't that money working hard for you? That mindset of being wealthy, that is the mindset you need to have. That's the mindset that wins. This book
is not just about making money. Title ये बोलता है make epic money, but when I was thinking about the book, I was like, I have to bring it to order ताकि हर एक चीज जो इंसान को पैसे के बारे में जरूरत हो आपको मिलती रहे. So here are the table of contents of the book. वो हर एक चीज जो इस बुक में है. I start with why should you even care about money? There's so many people who are like, you know what, money is not important. Don't run after money. I was actually one of them. मैं जिंदगी भर ये सोचता रहा कि पैसा को मैं ठोकर मारूंगा. मैं पैसे की इज्जत नहीं करता था. And I suffered because of that. I paid the repercussions of that attitude. I don't want you to do that. I want you to understand why money is important. Then I want you to know how to earn money. क्योंकि सिर्फ सैलरी से आप पैसा नहीं कमा सकते. ये तो गिवन है. You can't, and we will cover this very soon. So I want you to be exposed to the mindset of earning multiple streams. I then want you to spend that money. क्योंकि क्या ही फायदा उस पैसे का अगर आप उसको अपनी जिंदगी के लिए खर्च नहीं कर सकते. I want you to spend that money in a way that you enjoy life. You buy the things that you want, you spend it on things that you have, but you spend it wisely. ये नहीं कि अफलातून के जैसे जितने भी पैसे आए वो खर्च कर दिए. You genuinely do it being conscious of how it works for you. And then you also start saving. And saving ना एक बहुत बड़ा सा डरावना प्राणी है. Because we are like, नहीं हमें सेव करना नहीं आता. हमें नहीं पता कि कैसे करते हैं. Where should I put that money? How should I do it? And I will teach you that. Because the first use of that money is to protect you. अगर वो पैसा आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, उस पैसे का फायदा है क्या? How do you use that money to protect yourself from things that can go wrong? किसने देखा है कि जिंदगी में क्या होने वाला है? भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को कुछ हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट, कहीं कोई बीमारी. You have to protect yourself for that, and money will do that for you. But the big thing is, you want that money to finally grow. आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ सैलरी से नहीं आए, आपका पैसा बाकी जगहों से भी आए. How does that make it happen? By investing that money. By understanding कि आपका पैसा कहाँ डिप्लॉय करके जो आपने सेव किया है, आप उससे और ज्यादा पैसा बना सकते हैं. So that you can manage that money well. आपके 20s में आप पैसा कैसे खर्च करते हैं, आपके 30s में कैसा खर्च करते हैं, आपके 40s में कैसा खर्च करते हैं, all of that will be very different. You need to understand that. लेकिन आप गलतियां करेंगे. You will make mistakes. Everybody makes mistakes. To be aware of those mistakes is the first step. But you also need to recognize what makes the world make those mistakes. वो कौन कौन से biases हैं which limit our understanding. वो कौन कौन सी फंडामेंटल गलतियां हैं जो हम पैसे को लेके आए दिन करते रहते हैं. And then I end the book with my favorite chapter. I'm not going to tell you what it is, but it's something that's very personal to me. Something that I felt most joy in sharing with all of you, but it will be a surprise when you pick up that book. It's a book for every age. 20s में अपना पैसा कैसे खर्च करें, depending on आप कितना पैसा कमा रहे हैं. How to spend your money in your 20s depending on how much you're earning. You do the same thing for your 30s as well. How much you're earning and what should be the way that you manage your money. You do the same thing for 40s as well. How do you manage your money when you're in your 40s? It's a book that covers every possible age range. It's a book that's actionable. ये नहीं है कि पढ़ लिया, सीख लिया, okay, I now know something. No. It makes you act. It asks you to do the things that you are supposed to do with your money. It forces you to get into action because it just doesn't want you to tell what you know about money. It wants you to do the things that you should do about your money. It is guiding as a mentor. It will give you Excel sheets, it will give you video references, it will take you to the entire world's information that is available so that you know what you need to know more if the book doesn't do a good job of it. And it doesn't overwhelm you. ये मैंने promise किया था आपके साथ कि ये वही boring technical money books जैसी नहीं होगी. It's not a book that you will feel like यार मैं नहीं पढ़ सकता इस किताब को. It's a book that is very light. This is a snapshot from the book itself. This book is designed to be a light read. एक बहुत हल्की किताब है. Every chapter is independent of the others.
ऐसा नहीं है कि पिछले चैप्टर को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक पुराना या नया चैप्टर नहीं पढ़ सकते. सो प्ले अराउंड विद इट. बुक के साथ ना एंजॉय करके खेलिए. हर रोज कुछ पन्ने पढ़िए एंड कम बैक टू इट द नेक्स्ट डे. व्हेन द बुक गेट्स बोरिंग, ड्रॉप द बुक. फिर से कभी भी मत उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अंत में ना टेक 5 आइडियाज फ्रॉम द बुक. 5 आइडिया जो आपके जहन में बस गए, एंड योर चॉइस वॉट एवर दोस 5 आर, एंड अप्लाई देम टू योर लाइफ. अपनी जिंदगी में उन 5 चीजों को अप्लाई करिए. मेक देम योर अनब्रेकेबल मनी बिलीव्स. जो आपकी धारणा है ना पैसे को लेकर, उसको मजबूत बना दीजिए. बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट वे टू टेक दिस बुक अप. पैसे को लेकर 3 चीजें जो मैं सीखा हूं, 3 चीजें जो बहुत मुश्किल से सीखा, लेकिन जब समझ में आई ना दिमाग खुल गया. नंबर 1, अर्निंग, पैसे कमाना. मुझे ऐसा लगता था कि एक मिडिल क्लास प्लेबुक है, उस मिडिल क्लास प्लेबुक में यू गेट अ डिग्री, देन you get a job, you earn a salary, every month that salary comes, every month you spend something of it, you take on loans to buy a house, to buy a car, to take your vacation, to whatever, you keep paying those loans off from the salary you get, and then one day you die. That's just how life works. Your salary does not cut it. आपकी सैलरी आपके लिए कभी भी काफी नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी में, इस दुनिया में इन्फ्लेशन नामक एक चीज है. There is something called inflation which is killing the value of your money every single year. तो अब क्या करेंगे? जीना तो रोक नहीं देंगे क्या? You have to still spend some money. Rent have to, food have to, clothing have to, education have to. So you can't cut down your expenses so that it goes to zero और अपनी पूरी सैलरी आप सेव कर लेंगे. That doesn't work. It can't. But income has no ceiling. And I want you to drill down in your head. ये एक बात अपने जहन में डाल दीजिए कि आप जितना कमा सकते हैं ना दोस्त, उसकी कोई लिमिट नहीं है. Your income has no ceiling. आप जब तक ये सोचेंगे कि आपकी सैलरी ही सिर्फ एक इनकम सोर्स है, you are gone. But if you begin to believe कि मेरी नौकरी एक जरिया है, and there are multiple such income streams that I can build in life, that is the mindset that I want you to have. You have to look for those income streams. And I'm not suggesting that you start your own business along with your job, that you start freelancing along with your job. That's one of the ways, but not the only way. बहुत सारे और जरिए हैं. But you have to make the time to make it happen. क्योंकि आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने मैनेजर के लिए नहीं. You are so used to consuming yourself in your job that you forget to stop and think कि मेरी जिंदगी मैं किसके लिए जी रहा हूं. It reminds us of a very hard-hitting quote that we put up on Instagram recently, and it basically said कि अगर खुदा न खास्ता आप मर गए ना, 48 घंटे के अंदर अंदर आपका मैनेजर एक नई जॉब पोस्टिंग डाल के आपको रिप्लेस कर देगा, लेकिन आपके परिवार को वो मौका नहीं मिलेगा. तो जितना भी आप अपनी जिंदगी अपने जॉब को दे रहे हैं, उन रिश्तों को भी दीजिए जो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते. एंड दैट मेक्स यू क्वेश्चन हाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ, हाउ यू थिंक अबाउट योर टाइम, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन. द बिग टेक अवे, इनकम हैज नो सीलिंग. आप जितना कमाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है. आप जितना खर्च करते हैं वो मिनिमम आपको खर्च करना ही पड़ेगा. लेकिन आप जितना कमाते हैं ना, उसका कोई भी लिमिट नहीं है. यू कैन गो एज हाई एज यू कैन, बट इट रिक्वायर्स यू टू मेक चॉइसेस. दूसरा, बजटिंग. जब हमारे पास पैसा आता है ना, वी डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद इट. इतने सारे लोगों से मैं आए दिन बात करता हूं और यही पूछते रहते हैं, अंकुर ये पैसा आ गया है, लोन ले लें, इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कितना पैसा इधर डालें, कितना पैसा उधर डालें. एंड आई कीप टेलिंग देम, यार इतना लोड नहीं लेना है लाइफ में, बिकॉज इफ यू अर्न दैट मनी यू शुड बी स्पेंडिंग दैट मनी एज वेल, राइट. पैसे का और काम ही क्या है? इफ दैट मनी इज नॉट वर्किंग फॉर यू, व्हाई वुड यू slog so hard to earn that money in the first place? But
इफ यू लिविंग लाइक अ माइजर कि सारा पैसा आया और बस तिजोरी में छिपा दिया, अंकुर नहीं ये पूरा पैसा सेव करना है, वी हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी, then you are stupid. You're generally stupid. But the other extreme is also stupid, which is अरे जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, जितना भी पैसा आएगा उड़ा दो, पार्टी करो, वेकेशन पे जाओ, जूते खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, do whatever you have to because you live only once, YOLO, hashtag. That's also stupid. The right way is budget. Allocate money for different things that you want to do in life. It's simple. But when you start thinking about it, it can change everything that you think about money. There's a famous rule. Maybe you've heard of it. बहुत बार इस rule के बारे में बात कर चुका हूं. It's called the 50-30-20 rule. वो ये बोलता है कि जब भी आपको हर महीने पैसे मिलेंगे ना, whatever money you get at the end of every month or the start of every month, break it into these 3 parts. First is 50%. And that 50% should cover your needs. आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको ये 50% कवर करना चाहिए. Your EMIs, your rent, your food, your electricity, your water, your basic running expenses that you need to spend to live life. इसको आप avoid नहीं कर सकते. You can't be like, maybe I won't spend this money this month. नहीं, ये आपको हर महीने खर्च करने ही पड़ेंगे. So whatever salary you get, 50% of that, you keep it as that needs. And then 30%, ये आपकी इच्छाओं के लिए. These are your wants, your desires. So you want that phone? Make it happen. But make it happen in this 30%. You want to go out and party? Make it happen. But do it in this 30%. You want to order in and you don't want to cook? Make it happen in this 30%. And then the remaining 20%, you save. Save to invest. Invest क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको बड़े खर्चे करने हैं. Maybe you want to buy a big house. Maybe you want to go for another education. Maybe you want to sponsor the education of your kids. Maybe sponsor the marriage of your kids. If you have kids, you certainly have to plan for your retirement. जब आपके पास कोई income नहीं होगी लेकिन खर्चे तो बंद नहीं होंगे. How does that work? Through this 20%. And you might think ये 20% से तो कुछ होगा या नहीं. But you'll be surprised at how far this 20% will go. But when you think about this, it seems very simple. So I added a twist to this when I thought of this as a rule. And the twist is, we get increments, right? हर साल जितनी भी कम मिले या ज़्यादा मिले, that's immaterial. But we get an increment. Some get 5%, some get 10%, some get 15, 20%, depending on the industry you're in, the role you're in. Now, if you get that increment, and you again start spending it in the 50-30-20 ratio, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. It simply means that as your income rises, your needs are also rising. But that shouldn't be the case, because your needs are by definition needs. And you should have limited needs. Your desires could be a lot more, but your needs should not be. So turn this ratio around, which means instead of devoting 50% of your increment to the needs section, devote 20% of it. Keep the 30% of wants, या आपकी इच्छाएं जो हैं, to the 30%, and take 50% of your increment to your savings. तो आपने रेशियो को इन्वर्ट कर दिया. You started with 50-30-20, but with every increment you do 20-30-50. What happens? आपकी ज़रूरतें जो हैं वो धीमे धीमे बढ़ती हैं, and that keeps you in check. आपकी इच्छाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता. Your wants are still at 30% and you're enjoying life the way you should. But you're increasing your savings. You're increasing your investment. तो आगे जाके आप वो जो बड़े खर्चे करने चाहते हैं ना, you can do it with your own money. You don't need to depend on a loan. You don't need to depend on somebody else. Certainly not your family or your kids. You can do it being independent financially. That is the beauty of budgeting. That is when you become smart with your money. And फिर तीसरा, investing. The big question mark. कहाँ invest करें अंकुर? Where should we invest? What should we do? It's not scary, my friend. इतना डरावना नहीं है.
You may think, oh my God, I don't know, मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे नंबर से बहुत डर लगता है, it's too technical, the world keeps telling me what to do. Start. Just start. The amount does not matter. आप 500 रुपए से शुरू करिए, आप 50 रुपए से शुरू करिए. The key is time, my friend. Because most of you below 18 to 30, even in your 30s, what you have is what most investors would love to give billions of dollars for. Time. आपके पास वक्त है. You have time in life, my friend. If you start today, you have 10, 20, 30, 40 years of making this happen for you. You have to build assets. Build and buy things that make money for you. हमें लगता है कि जो चीज हमने खरीद ली वो एक एसेट है. It's not. Only if it makes money for us, it's an asset. वरना हर एक चीज जो हमसे पैसा मांगती है वो एक लाइबिलिटी है. आपका घर आपके लिए लाइबिलिटी बन सकता है, आपकी गाड़ी आपके लिए लाइबिलिटी बन सकती है, आपने जो महंगी घड़ी खरीदी है वो लाइबिलिटी बन सकती है, आपका फोन आपकी लाइबिलिटी बन सकता है. You have to start thinking like you owe the money a response. That money is not free. आपने उस पैसे के लिए बहुत मेहनत करी है. आप क्यों उसको एक ऐसी चीज पे खर्च करेंगे जिसकी औकात, हैसियत दिन ब दिन घटती जाती है? Even if it's functional. And if you do that, why would you spend your precious money on that? Do it from your wants. Budget it the right way. लेकिन अगर पूरे का पूरा पैसा एक ऐसी चीज पे खर्च करते हैं जो आपके लिए पैसा बना ही नहीं सकता, you will be ending up with a lot of things with declining value and no money at all. कहाँ की समझदारी है? So what Make Epic Money does is that it summarizes every asset class. And when I say asset class, I mean every possible option जो आप यूज कर सकते हैं अपने पैसे को खर्च करने के लिए. अपने माँ बाप के एकदम प्यारे फिक्स डिपॉजिट में पैसे खर्च करने हैं, मैं आपको समझा दूंगा क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए. आपको सोने में इन्वेस्ट करना है क्योंकि दादा दादी नाना नानी वही करते थे, मैं आपको समझाऊंगा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. हर एक एसेट क्लास, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ट्रेडिंग हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, हर एक चीज का सिंपल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा जब आप इन चीजों में डालते हैं उसका क्या होगा, उससे आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे या बढ़ेंगे कि नहीं. एंड दैट इज व्हेन इन्वेस्टिंग becomes your weapon, your strength. Let me ask you a question. And इसके लिए फिर से जाके कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि क्या आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र चेंज होती है, आपकी सैलरी चेंज होती है, डू यू नो हाउ योर अप्रोच टुवर्ड्स मनी शुड ऑल्सो चेंज? हाउ मेनी ऑफ यू नो what should be the approach depending on your age and your income? कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, बताइए मुझे. देखिए जरा क्या बता रहे हैं लोग. Okay, play this. All right, let's see. Do you know how to change your money approach with age and income? No, no, no. बड़ा बड़ा no, no, no. एक छोटा सा बेचारा yes कहीं घूम रहा है. But no, not yet. I love that answer. I love that answer. Not yet. इसका मतलब ये नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे अभी नहीं पता. I love that. Otherwise, no, no, no. We just don't. We don't. Let's try and understand how that works. Can we go back to the slides? Imagine your
age, 20s, 30s, 40s, and beyond as well. And imagine your income. And 3 simple से cuts लेते हैं. If you're earning less than 3 lakhs an annum, you're earning between 3 to 9 lakhs an annum, and you're earning above 9 lakhs an annum. I don't know how many of you know, मैं भारत की बात कर रहा हूं. अगर भारत में आप सालाना 9 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, आप भारत की आबादी के टॉप 1% में हैं. You're in the top 1% of India's population if you're earning more than 9 lakhs an annum as a household income. So this is a pretty good split. My question to you is, do you know what to do in each of these boxes? Like if you're in your 20s and आप 3 लाख से कम कमाते हैं, do you know how to invest your money? Do you know how should you think about your money? Do you know whether you should have a credit card or not? Do you know what kind of loans should you take if at all you take them? I will explain all of that. आपका emergency fund क्या होना चाहिए? How should you think about your health insurance? How should you think about your life insurance? How should you think about the maximum amount you should spend for your wants? आपकी इच्छाओं के लिए आपको कितना पैसा maximum खर्च करना चाहिए? Where should you keep your money जो कि risk free है? Things that give you a fixed rate of return. कहाँ कहाँ आपको पैसा डालना चाहिए जहाँ equity है, variable return. उसमें भी how should you split it between large cap, which are stabler companies, middle cap, which are less stable, low cap, which are very small, highly risky companies. How should you think about gold investing? How should you think about real estate investing? How should you think about other investing classes? आप credit card के बारे में कैसे सोचेंगे? Loans के बारे में कैसे सोचेंगे? And imagine, हर एक उम्र के लिए, every single age, हर एक income के लिए, every single income, you have this approach. That is what I want to give you. That is what this book can offer. ये book genuinely आपकी सारी पैसे को लेकर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है. But as I had said, I will not stop at just giving you that. I promised you all that you will get something if you come and attend this event live with me. If you register for the event, if you show up and you care enough, I will make something happen. So imagine कि आप ये book खरीदते हैं. And this book is a really nice hardcover, beautiful, lovely size pocket. I love the look and feel of this. This book is coming to you and coming really, really soon. But imagine if along with this book, I gave you an analyzer. An analyzer that asks the question, what is my relationship with money? मेरा पैसे के साथ रिश्ता क्या है? How do I think about risk? How did I grow up with money? How did that impact my relationship and knowledge with money? Basis that, मेरी फितरत क्या है पैसे को लेकर? क्या मैं थोड़ी कंजूसी से पैसे को देखता हूं? क्या मैं बिल्कुल दिल फेंक के पैसे बांटता हूं? क्या मैं अपने पैसे के साथ बहुत गार्डेड हूं, सिक्योर हूं, या अपने पैसे के साथ हमेशा डरा हुआ महसूस करता हूं? Questions that will help you understand कि आप अपने पैसे को कैसे देखते हैं, and through that what kind of approach should you adopt for your money. लेकिन यही नहीं रुकेंगे. What if after that I gave you a personal finance journal as well? एक journal तो काफी लोग रखते हैं आजकल, where you are documenting your thoughts. You're like, I felt like this today, I didn't feel like this today, I felt this, I felt that. But what if there is a journal around your money? आपके पैसे को लेकर एक journal है, where you're documenting how you felt about making that purchase, how you felt about wanting to make this purchase. आपका इस महीने कितना खर्चा हुआ, इस महीने कितना आपने सेव किया, how did that make you feel? And यही नहीं रुकेंगे. उसके बाद what if I gave you a step by step investing guide? ये imagine करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ सर पैर ही नहीं है कि अपने पैसे के लिए आज क्या करना है. मैं आपको बताऊंगा डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, कहां कहां खोल सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सोने में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं, एफडी कैसे खोलते हैं, कहां कहां खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट पिकिंग म्यूचुअल फंड्स, हाउ डू यू गो अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, एवरीथिंग अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता है.
step by step, holding your hand like a friend, like a mentor. लेकिन यहां भी नहीं रुकेंगे. इसके बाद मैं आपको एक्सेल शीट टेम्पलेट्स दूंगा, क्योंकि एक्सेल तो खेलना ही है. एक टेम्पलेट होगा जो आपको यह बताएगा कि आप अपने इन्वेस्टिंग के थ्रू 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं. सो इट विल टेल यू हाउ टू रीच दैट नंबर, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट फॉर, व्हाट इज द डिसिप्लिन विद विच यू नीड टू इन्वेस्ट. फिर एक एक्सेल टेम्पलेट होगा जहां मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने कर्ज कैसे जल्दी से चुका सकते हैं. होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दैट गॉडडैम लोन so that you free yourself and earn your freedom. फिर एक एक्सेल शीट होगी जहां मैं आपको यह बताऊंगा कि जिंदगी की इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको कैसे लेने हैं. गाड़ी खरीदनी है या रेंट पे भी ले सकते हैं, घर खरीदना चाहिए या रेंट पे ले लें. थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता नहीं है कि इनको डिसाइड करने का जरिया क्या है. इन एक्सेल शीट्स पे भी नहीं रुकेंगे. What if after that I give you a fully loaded personal finance course? एक कोर्स जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. It's 5+ hours, जहां मैं आपको वो हर एक चीज पैसे के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो मैं सीखा हूं, गलतियां कर करके, ठोकरे खा कर. इधर भी नहीं रुकेंगे. What if after that I give you an investor starter kit? आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू ही नहीं करी है, एंड मैं कुछ ब्रांड्स की मदद से आपकी वो इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने की कोशिश करवाऊंगा. तो विंट वेल्थ है जहां आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं. एंड इफ यू वर टू स्टार्ट एन एफडी, आई गिव यू Amazon वाउचर्स थ्रू विंट वेल्थ. हाउ कूल इज दैट? विल नॉट स्टॉप देयर. विल गो टू स्क्रीनर, which is one of India's most loved stock analysis platform, where almost everyone comes to analyze companies, analyze stocks, and will give you a free 1-month premium subscription, something that is not even available in the market. Will not stop at that. We'll then go to JAR, which is one of India's most well-known brands for investing in gold. And if you make your first transaction of investing in gold, एक्स्ट्रा गोल्ड फ्रॉम जार, जहां आप मात्र 50 रुपए से भी अपनी गोल्ड इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं. विल नॉट स्टॉप एट दैट. विल गो टू इंडिया गोल्ड, विच इज बेस्ट नोन फॉर गोल्ड लोन्स. सोना भर भर के घर पे पड़ा हुआ है. When do you start using it to start making money for you? If you use it for availing a loan, which is far better than availing a personal loan at a very high interest, then there will be a 50% waiver on the processing fee, which is the single biggest cost जब भी आप एक ऐसा लोन मार्केट में लेना चाहते हैं. Will not stop at that as well. हम लर्न ऐप जाएंगे जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन में बादशाह है, and they have this flagship stock trading course that traders love. वो भी हम आपको फ्री एक्सेस देंगे. इस इन्वेस्टर स्टार्टर किट पे भी नहीं रुकेंगे. We'll go even further. We'll work with brands to help you make money, run your business. Let's start with Big Rock. Big Rock domains बेचता है, websites खड़ी करता है, hosting services देता है. And we will give you a discount on a combo that will give you a domain name, a business email ID, and hosting your website so that you can get started on your freelancing journey right away. And professionally so. उस पे भी नहीं रुकेंगे. We'll go to AWS, the absolute king of the web world. आप सर्वर जहां भी खड़ा करना चाहें, AWS का नाम जरूर आएगा. What if we gave you free AWS credits for every startup worth $5,000? 4 लाख रुपए से भी ज्यादा. Absolutely free. आपको बस स्टार्टअप होना होगा. इंडिविजुअल्स को नहीं मिल सकता. But if you're a startup, you get this. इस पे भी नहीं रुकेंगे. We'll go to PayBooks, one of India's best known HR payroll software. And you'll get a discount on the yearly subscription of that so that you can run your lovely small and medium business without putting a burn in your pocket. इस पे भी नहीं रुकेंगे. We'll then go to Indify, best known in India for providing business loans in the best manner possible. Will give you a discount
on the processing of all small and medium business loans that you will need for your business. All of this, let me summarize. You get the book, but what if you also got a what is my money profile analyzer? How much would you put that value? एक ऐसा एनालाइजर जो आपको ये बताता है कि आपकी पैसे की फितरत क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको कहां पैसे खर्च करने चाहिए, कहां नहीं करने चाहिए. हाउ मच वुड यू पे फॉर दैट? एक फाइनेंशियल एडवाइजर के अगर आप पास जाएंगे, दे विल यूजुअली चार्ज 1% और सो. इट विल रन इनटू थाउजेंड्स, lakhs of rupees depending on आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. And if you get this answer right, my friend, it can change the way your money works for you. I'll be very conservative. मैं बोलता हूँ, you know what, अगर मैं ये एनालाइजर कभी लूंगा तो मैं हजारों रुपए देने के लिए तैयार हूँगा. लेकिन क्योंकि आप 18 to 30 हैं, you still starting your career, let's say you will be willing to pay $499. Conservative. Then let's go to the personal finance journal. You go to any journal in the market, you pick up a really good quality one, and it helps you feel nice. It helps you express your emotions. But a journal that helps you with your money. एक ऐसा journal जिससे आप अपने पैसे के साथ बात कर सकते हैं. How much would you value that? हजारों, लाखों रुपए का एक ऐसा journal जिसके साथ आप conversation कर कर अपने पैसे को अच्छे से समझ सकते हैं. I'll still be conservative. I'll say, you know what? 499 रुपए. Let's go ahead. एक step by step investing guide. अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया, right? You have no idea what investing is. You're scared of investing. You don't know what to do. If you were to go to a financial advisor, they would charge anywhere between 0.5 to 1, 1.5, 2% for this. They will do everything for you. You still wouldn't know what to do. And you'll be like, हाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हजारों, again, लाखों रुपए. But what if you had this guide that got you started? एक ऐसा गाइड जो एक्शन ओरिएंटेड है ताकि आपको वो हर एक चीज जो करनी है पता चले. लेट्स बी कंजर्वेटिव अगेन. मैं बोलता हूं, यू नो व्हाट, ये भी 499 रुपए. लेट्स देन गो टू द एक्सेल शीट टेम्पलेट्स. एक टेम्पलेट जो आपको ये बताता है कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं. एक टेम्पलेट जो ये बताता है कि आप अपना लोन जल्दी से कैसे चुका सकते हैं. एक टेम्पलेट जो ये बताता है कि आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए या किराए पे लेनी चाहिए. बेसिकली टेम्पलेट्स जो आपका पैसा बनाने या बचाने की कोशिश कर रहा है. अगर कोई आपको ये बोले दैट यू नो व्हाट, इन योर होम लोन आई कैन सेव 20 lakh rupees for you in interest, how much would you pay that person? How much would you pay a person who told you a legit way to help you save 20 lakh rupees of interest? 1 लाख रुपए दे देंगे उसको? 50,000 रुपए दे देंगे? 10,000 दे देंगे? What if I asked you for only 199? आप मुझे 199 रुपए पर टेम्पलेट दे दो. 597 for these 3 templates. Conservative again. Then let's go to the course. इसकी वैल्यू तो मुझे पता है. This course is launching in Jan 2024. It will be priced at 999 rupees. This is going to be available on WebVeda, which is the startup that I run around online courses. This is 100% known. Then let's go to the investor starter kits. You see this value coming in. Amazon vouchers, extra gold on the first transaction. You get premium membership of Screener. You get processing loan waivers. You get all of these things, the value of which minimum is 5,750 rupees. Then you come to the freelancer tools. आपको AWS से ही 4 लाख रुपए मिल रहे हैं. But you know what, because it's for startups, maybe it doesn't apply to everyone. So we were a little conservative with like some will take, some will not take. We will see. We priced it at 19,999. Still extremely conservative to the entire value. So here's what. You buy the book. And then I want to give you a lot more because I feel that you will benefit from that. So you have the analyzer, $499. You have the personal finance journal, $499. You have the investing guide, $499. You have the 3 Excel sheet templates, $597. You have the personal finance course,
$999. You have the investor starter kit, $5,750. You have the freelancer tools, $19,999. The total value of all of this is 29,241 rupees. 29,241 रुपए का वैल्यू. मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये सारी चीजें आपको कोई देने के लिए तैयार हो, वो चीजें जो आपके लिए काम करेंगी, हाउ मच वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर दिस? इस 29,000 रुपए की वैल्यू के लिए आप कितने पैसे देने के लिए तैयार होंगे? 25,000 दे देंगे? 20 दे देंगे? 15 दे देंगे? 10 दे देंगे? 5,000 दे देंगे? 2,000 दे देंगे? Because all of you attended this live, you registered for this live, I will give this entire value of 29,241 rupees will come to you for only free. Absolutely free. 100% free. ये हर एक चीज आपको एब्सोल्युटली फ्री. 29,241 रुपए की वैल्यू की चीजें आपके लिए कंप्लीटली फ्री इफ यू बाय द बुक. सो हियर्स व्हाट यू हैव टू डू. नवंबर 28, जो कि 2 दिन के अंदर अंदर है, ट्यूसडे मिडनाइट से पहले अगर आप इस किताब को खरीदेंगे, you will get all of these freebies delivered to you absolutely free of cost. That is my promise. Head to makeepicmoney.com and order the book right now. Makeepicmoney.com is now open and you can now order this book, which will give you not just the hardcover of this book, beautiful edition, आपको उसके साथ 29,241 रुपए की चीजें मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री. ये सारी ऑफर्स 28 नवंबर को खत्म हो जाएंगे. ये मेरा वादा था आपसे. अगर आप आएंगे, अगर आप रजिस्टर करेंगे, आपको कुछ ऐसा दूंगा जो किसी और को कभी और नहीं मिलेगा. तो इस 28 नवंबर के बाद ये ऑफर वापस कभी नहीं आएगा. That's my promise. Nobody is going to get any of this, even a part of it. ये सिर्फ आपके लिए ही है. The entire freebie collection and the book will be delivered to you Jan 29th, 2024. The best way to start the new year. 29 जनवरी 2024 को ये किताब आपके घर पे होम डिलीवर होगी और सारे के सारे freebies will be delivered to you over email that you can use whenever you are ready until 31st of March. This is my promise. This is my gift. But I don't want to leave without one last thing. हमें ना ऐसा लगता है कि हमारा बैकग्राउंड, हमारा lack of knowledge, our expertise, they all hold us back. ये हमें रोक के रखता है. लेकिन मुझे जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये पता चली है कि ये चीजें नहीं है जो हमें होल्ड कर रही है. These are not the things that hold us back. हमारे पीछे एक भूत घूम रहा है, एक ऐसा इंसान जो हमें बोलता रहता है तुम ये नहीं कर पाओगे अंकुर, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा. जो हमें रोकता है ना, वो हमारा विश्वास है ऑफ व्हाट वी नो. वो ऐसा विश्वास जो हमें ये बोलता है कि हम ज्यादा पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे, हमारी फितरत में ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है, हमारा लक ही नहीं है. वो ऐसा विश्वास जो हमें ये बोलता है कि मिडिल क्लास लोग ना हमेशा ऐसे ही घिसते रहते हैं, उनकी कभी जिंदगी चेंज नहीं हो सकती, वो कभी भी इस मिडिल क्लास से उभर नहीं सकते. एक ऐसा अंधविश्वास जो हमें ये बोलता है कि हमारे पास यार इतने कर्ज हैं, कहां से निकलेंगे, कैसे इससे निकल पाएंगे, हो ही नहीं सकता, छोड़ो. एक ऐसा विश्वास जो हमें ये बोलता है कि पैसा ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाएगा.
एक ऐसा विश्वास जो ये बोलता है कि कुछ ना सर पे हाथ होता है किसी के, वो ही पैसा बना पाते हैं। वो अमीर लोग है ना, उनको आता है पैसा बनाना, हमें नहीं आता। एंड दिस इज नॉट ट्रू। ये जो विश्वास है ना, ये आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है या आपकी जिंदगी बना सकता है। ये विश्वास सिर्फ आपके अंदर है। ये विश्वास मैं आपको नहीं दे सकता, आप किसी और से खरीद नहीं सकते। ये विश्वास आपको आपके अंदर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास अगर आपने अंदर बदल दिया तो आप दुनिया की हर एक चीज बदल सकते हैं। इफ यू चेंज योर बिलीफ्स, यू कैन चेंज एवरीथिंग। मेक अ बिग मनी मेरा एक अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट जो आपके विश्वास को चैलेंज, प्रोवोक और चेंज करने का एक अटेम्प्ट है। मैं चाहता हूं कि आप हर एक इंसान आईने के सामने खड़े होकर ना अपने हर एक विश्वास को क्वेश्चन करें कि क्यों मैं ऐसे सोचता हूं, क्यों मुझे लगता है कि पैसा मेरे बस में नहीं है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा सकता, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बावजूद भी मैं अमीर नहीं बन सकता, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। क्योंकि ये विश्वास जब मैंने अपनी जिंदगी में बदला ना, तो मेरी जिंदगी बदल गई। When I changed my beliefs, I changed my entire life. And मुझे यकीन है कि ये किताब आपकी जिंदगी के आपके विश्वास भी बदल देगी। That is my promise. Make epic money.com. Thank you so much. We're at 8:05. Let's take some questions. I want to take some questions. And let's do that. लीजिए, presentation हटा दीजिए. We will go live and just have a few conversations. Interesting. Okay, so a few questions that have come in. Questions about the book. Are you shipping internationally? अक्षता ने पूछा है. Yes, अक्षता, we are shipping internationally, लेकिन उसका एक additional shipping cost होगा. अगर आप भारत या इंडिया में ही ऑर्डर करेंगे तो you do not have to pay any shipping fee, but to ship international, as you might understand, we have to spend some money. Will this offer come back later? No. ये ऑफर फिर से नहीं आ रहा है. That is my promise. November 28th midnight, this offer is closed. You are not getting this offer ever back. वो कोर्स फ्री नहीं मिलेगा, वो एक्सेल शीट्स फ्री में नहीं मिलेंगी, वो इन्वेस्टिंग गाइड फ्री में नहीं मिलेगा. None of this is going to come back. Least of all, investor starter kits and freelance tools. The brands have worked really hard to get these offers to you, and this is not going to come back at all. Course language on WebVeda. Karan has asked this question. So Karan, this personal finance course will be available in Hindi and in English, both. So you will have a choice. You will get access to both these languages. When do we get the book and the freebies? This is something that Supriya has asked. You get this book delivered on Jan 29th, 2024. So about 2 months from now, the book is going to get delivered to your doorstep. This will be a courier that will reach you on Jan 29th. The freebies, सारे की सारे, वो आपको email के through मिलेंगे. So you will get an email on Jan 29th, which will have every freebie की detail. What are the terms and conditions? How do you avail? What is the process? What is the coupon code if there is any? And you will get all of those details. Adi, can I avail this if I haven't registered for the session but I've attended the entire session? Yes. So this is open to 2 people. People who attended the session and people who registered for the event, they are eligible to get this offer only till November 28th, as I mentioned. Book cost and where to buy. The book is priced at 399 rupees. It's a hardcover edition that comes to you at 399, and the way to buy this is makeepicmoney.com. makeepicmoney.com पे अगर आप जाएंगे, you will be able to get this book and order this for anywhere in the world.
Is this book useful for college students? Mandvi, absolutely, absolutely Mandvi. काश मुझे किसी ने कॉलेज में ऐसी बुक प्रेजेंट करी होती. आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था, द बुक दैट रियली चेंज माई लाइफ वॉज रिच डैड पुअर डैड. लेकिन वो बुक ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए खरी नहीं उतरती, बिकॉज इट वॉज रिटन इन द 1970s. बहुत ज्यादा रियल एस्टेट पे फोकस है. इट स्पीक्स ऑफ अ वेरी डिफरेंट मार्केट. इनफैक्ट ज्यादातर फाइनेंस बुक्स की यही प्रॉब्लम है. दे आर वेरी वेल रिटन. साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, इन्वेस्टर्स डिलेमा एंड ऑल ऑफ दोज. बट द चैलेंज इज दे डोंट अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहां घर खरीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, एक इमोशनल डिसीजन है, एक सोसाइटल डिसीजन है. लोगों की शादियां नहीं होती हैं क्योंकि उनके घर नहीं है. तो हाउ विल यू एक्सप्लेन कि अरे नहीं ये तो भैया फाइनेंशियल डिसीजन है? नहीं दोस्त, ये एक सोसाइटी का डिसीजन है. सो यू हैव टू बिल्ड दिस बुक टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कल्चर. इट ऑल्सो हैज टू बी वेरी सिंपल. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है मानवी, द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इज टाइम. आपके पास वक्त है. एंड दैट विल इंश्योर कि अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, अपने मनी जर्नी को आज शुरू करेंगी, यू विल बी फार अहेड than most of your batchmates by the time you touch 30. You will be sitting on a corpus which you will then use to enjoy your freedom. क्योंकि जैसा मैंने बताया, पैसे का सबसे बड़ा यूज चीजें खरीदना नहीं है, अपनी आजादी खरीदना है. अशोक, do you think the book will really help me build some sense around money? बिल्कुल अशोक, बिल्कुल. इस बुक का यही पर्पस है कि आप कैसे पैसे को समझ सकते हैं, अपने रिश्ते एंड पैसे के रिश्ते को समझ सकते हैं. सो इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी. यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इमोशंस. यू विल laugh at times, you will cry at times, you will slap yourself at times. That is the journey I will take you on through this book. And that's what I felt when I was writing this book. So I hope you feel the same way. Is this offer only available on the website? बिल्कुल. आपको कहीं भी ये ऑफर नहीं मिलेगा, ना ही Amazon पे, ना ही Flipkart पे, ना ही ऑफलाइन, कहीं भी और नहीं. It's only and only available on makeepicmoney.com. कहीं और से प्लीज मत खरीदिएगा. Everywhere else this offer does not exist. ये ऑफर सिर्फ 28 नवंबर तक makeepicmoney.com पे ही अवेलेबल है. 29 नवंबर से ये बुक प्री ऑर्डर के लिए Amazon पे रिलीज होगी. But that will be just the book, no other freebies attached to it. सिर्फ बुक मिलेगी. And 28th November is when this offer will also last. Rushil, how long will the course be valid for? Rushil, all our courses on WebVeda are lifetime access. तो सबसे बेस्ट चीज हमारी कोर्स की होती है कि हम बिल्कुल भी स्टूडेंट पे प्रेशर नहीं डालते. You have to finish this course in 1 week, in 2 weeks, in 1 month. None of that. So the courses are lifetime. आप जितनी बार देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं. आप जब जब देखना चाहते हैं देख सकते हैं. आप जब कोई भी चीज काट कर उसको फिर से देखना चाहते हैं देख सकते हैं. Completely your decision. You get it for lifetime. In fact, not just this course. इस कोर्स के जो सारे अपग्रेड्स होंगे, every 6 months or so we upgrade the course. Have things changed in the market? Has something changed? And finance की दुनिया में तो change होता रहता है. Maybe there's a new brokerage firm that's come up. Maybe some brokerage firm has shut down or whatever the case is. So we will update that content and you will get absolutely free access to those upgrades as well. Again, for lifetime. Technical question. If I prefer the Kindle version, can I opt out of getting the physical copy? Sorry, Harsh. Not for this one. This offer is only for the physical copy and the hardcover of the hardcover of the book. Kindle edition या Audible कोई भी available नहीं है. It's only in English. कोई और भाषा भी available नहीं है. When the book actually releases on Jan 29th, we will have the Kindle version. We will have the audiobook. We will have languages, Hindi, Gujarati, Marathi and so on. लेकिन इस ऑफर के लिए it's only and only the physical hardcover edition in English so that we are able to deliver this. Sonali, do we get the personal finance journal with the book? Yes, you do. But Sonali, it's a digital personal finance journal. It's not a physical one. You can of course get it printed, but we will design a digital personal finance journal जो आप अपने लैपटॉप या अपने फोन पे टाइप करके मेंटेन कर सकते हैं. Because we feel a lot more people find that easier and that's why we will make it a digital copy, not a physical copy.
When does the book get delivered? Until when can I use the freebies from the kit? Piyush, the book gets delivered on Jan 29th, 2024. The freebies will also get delivered on Jan 29th, 2024. And the terms and conditions for the freebies will be mentioned in the email. Most of these are valid till March 31st. लेकिन कुछ में the validity is longer. तो हर एक फ्रीबी के लिए, ये स्पेसिफिकली इन्वेस्टर स्टार्टर किट और फ्रीलांसर टूल्स के लिए बोल रहा हूं, कोर्स तो जिंदगी भर के लिए वैलिड है. And of course, all the other things, whether it's the investing startup guide or the Excel sheets or the analyzer, all of those are of course for lifetime. But the investor starter kit and the freelancer tools, ये सिर्फ कुछ ही restricted time के लिए available होंगे. Most of them 31st March, but some of them will be beyond. वो सारी details आपको email पे मिलेंगी. Soumya, can you put the list of freebies on the website? It's already there, Soumya. So if you go to makeepicmoney.com, you see the list of all the freebies that are there, which will tell you what all you get. Swapnil, I'm in class 8. Can I buy this book? Swapnil, I would love for you to buy this book. Trust me, you will enjoy the book as well. But do ask your parents, because you don't want to be doing something that your parents wouldn't approve. So if you have their permission, please go ahead and buy this book. It will really make me happy. It will mean a lot to me. Why do we need to wait till 29th Jan? 2 महीने के अंदर कुछ बदलेगा नहीं. तो 2 reasons, and this is a valid reason. एक तो we have to produce this book. It's still under printing. So we have the edit ready. It's now under production. Because it's year end, तो थोड़ा सा वो slow cycle होता है. Plus we want to ensure that everyone gets it on Jan 29th. तो एक थोड़ा सा lead time delivery के लिए भी देंगे. So that's why we need this time to ensure that we do a good job. We don't slip on that. तो 2 महीने की wait है, but that is, trust me, going to be worth the wait, because when you get the book in your hand, you will be the first ones to get it in the country. कहीं और भी किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि Jan 29th को ये book physically release हो रही है, and उसके बाद ही लोगों को मिलेगी, and that will be something that hopefully will be brag worthy. Does it need context from your previous books to understand this one? बिल्कुल भी नहीं. Absolutely not. The books are completely disconnected. Do epic shit और get epic shit done भी connected नहीं थी. Get epic shit done and do epic shit और make epic money भी connected नहीं है. आने वाली books भी connected नहीं होंगी. These are literally individual books. In fact, इनके chapters भी connected नहीं है. Make epic money में, if you go through one chapter, you will understand that chapter, take whatever you want to, and the next chapter is independent of that. Doesn't assume that you know anything before that, which is what I like when I write these books. Shivam, when will the book be live on Amazon? So Shivam, the book will be live on Amazon on November 29th, but it will be without the freebies. So the freebies are only and only available by November 28th orders. 29,241 rupees worth of freebies, absolutely free if you order by November 28th. Are you signing these copies too? No, these copies are not signed. The freebies are the ones that I am giving away. Signing will not be possible. लाखों लोग इस ऑफर को अवेल करेंगे and it is not physically possible for me to sign it. Digitally मैं साइन करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे वो धोखा लगता है. Here is my promise. अगर आप इस किताब को लेके कभी भी मुझे physically in person मिलेंगे, I will sign it for you. 100%. मैंने आज तक किसी को कभी भी एक फिजिकल सिग्नेचर के लिए मना नहीं किया है, and I will never do it for anybody else in the future as well. That's my promise and my commitment. कहीं भी, किधर भी, कितने भी रश में मैं अगर हूं, I will physically sign it for you if we meet in person. Is there a Hindi edition? No, as I said, इस offer के लिए it's only the English hardcover one, nothing else. Ram, when will there be any audiobooks available? Jan 29th. So Jan 29th, when the book is releasing in retail stores, on Amazon, Flipkart, it will also have the audio edition. It will also have language editions. It will also have the Kindle edition, and it will have the same hardcover. But all of this will be without the freebies that you're getting. Worth 29,241. मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है. 29,241 रुपए की वैल्यू की चीजें आपको जीरो में मिल रही हैं if you buy this book. Teja, how can we access the online course? It will be available through our education startup called webveda.com. वो भी 29 जनवरी 2024 को ही start होगा. The course is formally launching on the 29th of Jan 2024 along with the book. So that's when you will get access to that as well.
on the platform that we run called webveda.com. Okay, can I place an order for my friend as well? Absolutely. Be the friend that we all should be. अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मम्मी पापा के लिए, चिंटू के लिए, मिंटी के लिए, anyone in this world that you care about, please order the book. You just have to ensure that the address is right so that we deliver it to the address. You don't have to worry about giving it to them. Can we get a recording of today's session? Yes, on YouTube. Once this live is over, करीब 1 घंटे में, क्योंकि उतना वक्त हमें चाहिए होगा, we will upload a recording of this session ताकि आप इसको फिर से आराम से सहूलियत के साथ देख सकते हैं. Make your decision. We have 2 days to make that. November 28th midnight is when this offer lapses, which is buy this book for $3.99, get the hardcover edition of my third book, Make Epic Money, along with freebies worth $29,241. Will you get the freebies twice then? No, the freebies for the same person are only once. तो आपको एक और email ID से लेना पड़ेगा, because every freebie will be attached to a email ID or a phone number, because they will have to be uniquely done. So if you, for example, insert 2 email IDs, you will get the course on those 2 email IDs and the investing guide and the startup kit and the freelancer tools. But if there's only 1 email ID through which you're buying, then all of that will only go to 1. All right, all done. Perfect. Here is the refresher. Go to makeepicmoney.com and make the order happen right now. 26 नवंबर आज की तारीख, 28 नवंबर रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा. And you will lose the chance forever and ever to get these freebies worth 29,241 rupees. So buy the book, $3.99 for the hardcover edition of Make Epic Money, and secure assured prizes, freebies, tools, kits worth 29,241. Make epic money. Thank you, everyone. God bless you all. This is Ankur Warikoo signing off.